students. Now today we will study DAC device. The IC number of DAC is 0808. DAC is a device which convert digital data digital to analog converter. DAC is device which converts digital to analog converter. Means this device DAC converts the digital data into equivalent analog voltage or current. Generally, DAC converts the digital data into equivalent analog current. ठीक है. So DAC is used to convert the digital data into equivalent analog value. So generally, we in various applications we have to convert the digital data into analog values, such as microwave oven, speedometer of a car. There are different devices, ठीक है, which operates on analog values. But controlling device is microcontroller, and the microcontroller will produce the output in digital. So we have to convert. There is requirement to convert the digital data into analog value to control those applications, right? So microcontrollers are used in wide variety of applications, like measuring the control of physical quantities like temperature, pressure, speed, distance, etc. In these systems, microcontroller generates output which is in digital form. But the controlling system requires analog signal, as they don't accept digital data, thus making it necessary to use DAC which converts digital data into equivalent analog voltage. So basically, DAC IC converts the digital data into equivalent analog current. Hence, so ये DAC किस में कन्वर्ट करता है? डिजिटल को एनालॉग करंट में कन्वर्ट करता है. Hence we also require current to voltage converter. I to V converter means current to voltage converter to convert this current into equivalent voltage, right? So DAC जनरली एक IC है जिसका नंबर 0808 है ना, जो कि कन्वर्ट करता है डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में, है ना. और जनरली ये एनालॉग करंट में कन्वर्ट करता है. डिजिटल डाटा को इक्विवेलेंट एनालॉग करंट में कन्वर्ट करता है. तो करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर रिक्वायर्ड होता है एट द आउटपुट ऑफ DAC, right? So it clear. So now it is clear why we use the digital to analog converter to control the various applications which requires the analog signals to control them. But since the controlling device is microcontroller, so microcontroller produce the data in digital form, but the devices are operates on the analog signal. So that's why we required the digital to analog converter. So we will use the digital to analog converter. So in DAC 808, the digital outputs are converted into a current, and by connecting resistor to the output pin, we convert the result to voltage. DAC किस में कन्वर्ट करता है? करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है. करंट, और जहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं करंट के फॉर्म में, वहाँ पे एक रजिस्टर कन्वर्ट कर देंगे, तो रजिस्टर में करंट फ्लो होगा, तो उस रजिस्टर के अक्रॉस हमें क्या मिलेगा? वोल्टेज मिल जाएगा. सिंपल. सो टोटल करंट प्रोवाइडेड बाय द आउटपुट पिन इज अ फंक्शन ऑफ द बाइनरी नंबर ऑफ D0 to D7. मतलब जो बाइनरी नंबर देंगे हम, ठीक है ना, तो जो आउटपुट मिलेगा वो बाइनरी नंबर का फंक्शन होगा, जो कि हम नेक्स्ट अभी देखेंगे एग्जाम्पल में. सो वेयर D0 इज द LSB एंड D7 इज द MSB ऑफ द इनपुट में D0 से लेकर D7 तक बाइनरी इनपुट्स देंगे, जहाँ पे D0 क्या कहलाएगा? LSB कहलाएगा. D0 विल बी द LSB एंड D7 इज द MSB ऑफ द इनपुट, ठीक है. So
So this is the equation which is used to calculate the I out. I out is the function of I reference current, and D0 to D7 the input voltage. So I out is the I reference, D7 upon 2, D6 upon 4, D5 upon 8, D4 upon 16. They are the binaries 2 to the power of n, where n is the number of bits. So there are 8 bits which we have to convert. So this is 2 to the power this is 2 to the power 0, 2 to the power 2 to the power minus 1, 2 to the power minus 2, 2 to the power minus 3, 2 to the power minus 4, 2 to the power minus 5. Similarly 2 to the power minus 8, 7, because there are 8, because there are 8 input data. Similarly V0 is the similar manner. V0 is the VR reference, D0 upon 2, D1 upon D7 upon 6. So the example is given. if IF की वैल्यू आपको दी गई है, यदि IF की वैल्यू क्या है, इफ द IF इज 00H, ठीक है, ये 00 हेक्साडेसिमल में यदि इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ऑल द 8 बिट्स विल बी 0, एंड if V reference voltage is 10 volts. So by putting the value here, we can write V0 is equal to 10, 0 upon 2, 0 upon 4. So all this is the 0, and 0 is multiplied by 10. V0 is equal to V0. What is the value of V0? V0 is equal to 0. V0 is equal to 0. So if all the inputs are 0. Now if the data is ATH, so ATH is converted into the binary, so it is 1 0 0 0 and 0 0 0 H, and V reference is 10. Putting these values here, so we will find out V0 is equal to 5 volt. So the data is ATH, V0 is equal to 5 volt. If data is FFH, so now the question for you, if the data is FFH, then what is the output of V0? This is the question for you. You have to calculate by the following error method. So by error method, we will calculate the output voltage. Now this is the interfacing diagram. Here this is the 8051 microcontroller. This is 8051 microcontroller, which is interface with the DAC here. So DAC is connected with the 8051 microcontroller through the port 1. Through the port 1 के थ्रू हमने DAC को 8051 माइक्रोकंट्रोलर से कनेक्ट किया हुआ है. So the port 1, all the 8-bit ports of port 1 are connected to the data pins of DAC, D0 to D7. This will be the inputs. So microcontroller will provides the digital data from port 1 in digital form, and this data will be input to the D0 to D7. So this DAC will convert the current output in form of current by this formula. By this formula, we will get the output in form of current. So here we will get the output in form of current. Now we will use the op-amp. This is the op-amp, which converts the voltage
into the current. This is I to V कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर. ये करंट ऑप एम्प के इनपुट में आएगा और ये ऑप एम्प इसके आउटपुट को किस में कन्वर्ट करेगा, वोल्टेज में. यहाँ पे इनपुट करंट है, हाँ, और ये वोल्टेज टू कन्वर्टर ऑप एम्प यूज़ किया हुआ है, सॉरी करंट टू वोल्टेज. सो इट विल कन्वर्ट्स द equivalent current to the equivalent output voltage in DAC form. So similar, the DAC is interface with the 804 microcontroller to converts the input, to converts the digital input at the equivalent analog output, right? So you have to remember that DAC क्या करता है, इनपुट एनालॉग डिजिटल इनपुट को एनालॉग में आउटपुट में कन्वर्ट करता है. लेकिन एनालॉग आउटपुट किस फॉर्म में हुआ, करंट के फॉर्म में हुआ. जो एनालॉग आउटपुट मिलता है किस फॉर्म में मिलता है हमें, करंट के फॉर्म में मिलता है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर आई टू वी कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा आउटपुट में. DAC के आउटपुट में क्या यूज़ करना पड़ेगा, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा जो इक्विवेलेंट करंट को वोल्ट में कन्वर्ट करेगा. सो दिस विल द इंटरफेसिंग ऑफ DAC. ओके, थैंक यू.